ceremony very soon. Some of our guests have arrived, some are yet to come. Right. So, ladies and gentlemen, I've just received the news that our guest of honor and chief guest have arrived in the exhibition hall and they will be making their way here soon. Ladies and gentlemen, India has always believed in the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. It is this spirit that brings together participants from different regions, industries, and countries under one roof today. I would like to take a moment to appreciate the presence of our foreign delegates. I see many of you here in the hall. Thank you for coming all the way to India to grace this momentous occasion. A huge round of applause for our foreign delegates. Thank you. Again, requesting everyone to please take your seats. And to those who have joined us right now, a very warm welcome. Honorable Shri and Honorable Shri Manohar has already arrived to the exhibition. All the exhibitors and guests are requested to come to the exhibition inauguration hall.
Once again, a very good morning to all of you. We are now joined by our visitors, exhibitors, delegates, industry leaders. A very warm welcome to all of you. I again request you to kindly take your seats, put your phones on silent mode, and maintain decorum in the hall. Is rising, driving the Honorable Prime Minister's vision of हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी. presenting Bharat Buildcon, supported by Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India. This is the ultimate platform for manufacturers to deal directly with top architects, interior designers, developers, dealers, distributors, and government procurement agencies. The scale is unprecedented. Connect with over 1,000 plus international buyers from 100 plus countries and network with 30,000 plus industry leaders. Witness 24 plus sectors and the entire building material ecosystem all under one roof. Experience world-class infrastructure at India's largest convention center, Yashobhoomi, New Delhi, from 18 to 21 June 2026. Bharat Buildcon, where India builds the world. As India transforms into a global economic powerhouse, a new era of infrastructure is rising, driving the Honorable Prime Minister's vision of हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी. presenting Bharat Buildcon, supported by Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India. This is the ultimate platform for manufacturers to deal directly with top architects, interior designers, developers, dealers, distributors, and government procurement agencies. The scale is unprecedented. Connect with over 1,000 plus international buyers from 100 plus countries and network with 30,000 plus industry leaders. Witness 24 plus sectors and the entire building material ecosystem all under one roof. Experience world-class infrastructure at India's largest convention center, Yashobhoomi, New Delhi, from 18 to 21 June 2026. Bharat Buildcon, where India builds the world. As India transforms into a global economic powerhouse, a new era of infrastructure is rising, driving the Honorable Prime Minister's vision of हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी. presenting Bharat Buildcon, supported by Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India. This is the ultimate platform for manufacturers to deal directly with top architects, interior designers, developers, dealers, distributors, and government procurement agencies. The scale is unprecedented. Connect with over 1,000 plus international buyers from 100 plus countries and network with 30,000 plus industry leaders. Witness 24 plus sectors and the entire building material ecosystem all under one roof. Experience world-class infrastructure at India's largest convention center, Yashobhoomi, New Delhi, from 18 to 21 June 2026. Bharat Buildcon, where India builds the world. As India transforms into a global economic powerhouse, a new era of infrastructure is rising, driving the Honorable Prime Minister's vision of हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी. presenting Bharat Buildcon, supported by Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India. This is the ultimate platform for manufacturers to deal directly with top architects, interior designers, developers, dealers, distributors, and government procurement agencies. The scale is unprecedented. Connect with over 1,000 plus international buyers from 100 plus countries
and network with 30,000 plus industry leaders. Witness 24 plus sectors and the entire building material ecosystem all under one roof. Experience world-class infrastructure at India's largest convention center, Yashobhoomi, New Delhi, from 18 to 21 June 2026. Bharat Buildcon, where India builds the world. As India transforms into a global economic powerhouse, a new era of infrastructure is rising, driving the Honorable Prime Minister's vision of हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी. presenting Bharat Buildcon, supported by Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India. This is the ultimate platform for manufacturers to deal directly with top architects, interior designers, developers, dealers, distributors, and government procurement agencies. The scale is unprecedented. Connect with over 1,000 plus international buyers from 100 plus countries and network with 30,000 plus industry leaders. Witness 24 plus sectors and the entire building material ecosystem all under one roof. Experience world-class infrastructure at India's largest convention center, Yashobhoomi, New Delhi, from 18 to 21 June 2026. Bharat Buildcon, where India builds the world. As JSW is shaping tomorrow through innovation and a commitment to a sustainable, thriving nation. Today, JSW Steel is setting benchmarks with its state-of-the-art manufacturing and a highly diverse portfolio. JSW Energy illuminates millions of lives for a brighter, eco-friendly tomorrow. JSW Cement, as the Indian eco-pioneer, crafts the foundation of a greener future. JSW Infrastructure now stands as India's second largest and fastest growing private port company. JSW Paints is reimagining how we live in a greener tomorrow. And with the acquisition of Deluxe in India, we are on track to become India's most admired paints brand. JSW Foundation, dedicated to giving back and uplifting communities. JSW Realty envisions a better India beyond structures. Empowering businesses with innovation, JSW One echoes the theme of shaping a nation through technology. JSW Sports, synonymous with champion teams and elite athletes, it keeps pushing the boundaries of sporting excellence. Diversifying into the field of mobility, Ladies and gentlemen, JSW is proud to... in a few moments, we will be joined by our chief guest and our guest of honor. Once again, it is my pleasure to welcome you all to this inaugural ceremony of Bharat Buildcon 2026. To position India as a global economic powerhouse under the guidance and mentorship of Honorable Minister of Commerce and Industry, Shri Goyal, Vibrant Buildcon has now evolved into Bharat Buildcon, a key pillar in the national series alongside Bharat Mobility and Bharat Tech.
Ladies and gentlemen, join me in welcoming our esteemed dignitaries as they now arrive in the exhibition hall. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Shri Manohar Lalji, Honorable Union Minister of Housing and Urban Affairs, Honorable Shri Jitin Prasada ji. Please keep the applause coming. We are now joined by Shri Purushottam Rupala ji. A huge round of applause for our guests as we welcome them to this prestigious inaugural ceremony. Ladies and gentlemen, give it up for our chief guests and our guests of honor. Requesting everyone to take their seats as we welcome the dignitaries on the stage. Ladies and gentlemen, please put our hands together for all our dignitaries. Shri Manohar Lalji, Honorable Union Minister of Housing and Urban Affairs, Government of India. Honorable Shri Jitin Prasada ji, Minister of State for Commerce and Industry, Government of India, our guest of honor. We are now joined by Shri Purushottam Rupala ji, Member of Parliament and our guest of honor. Kindly take your seats. Once again, a very good morning to all of you. It gives me immense pleasure to welcome all our distinguished guests, industry leaders, exhibitors, delegates, associations, export promotion councils, and friends from the media to the inaugural ceremony of Bharat Buildcon 2026. My name is Mansimar Bedi, and it is my privilege to be your host. Ladies and gentlemen, the story of Bharat has always been one of resilience, innovation, and progress. Today, that story is being written in steel, cement, technology, and sustainable solutions that are reshaping our cities and communities. To commence this auspicious occasion, I now request everyone to rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे India has always believed in the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. In Indian tradition, the lighting of the ceremonial lamp symbolizes the dispelling of darkness and ushering in of knowledge, wisdom, and prosperity. May I now request our chief guest, our guest of honor, and other dignitaries on stage to kindly proceed for the ceremonial lighting of the lamp.
Thank you, dignitaries. To formally welcome all our guests and set the tone for the event, I now invite Shri Vishal Acharya, Director of Bharat Buildcon, to deliver the welcome remarks. Good morning, everybody. Your Excellencies, distinguished ministers of Government of India, Honorable Member of Parliament, senior officials of ministries, our cherished international delegates and industry friends. A very warm, heartfelt and a proud welcome to each one of you. Every great civilization is built twice. First in the imagination of its people and then in the materials they choose to build with. Last evening, I was walking around in the exhibition hall and I saw a Morbi tiles company, the owner putting up tiles in the booth. I just casually asked him, why are you still here? Why have you not gone back to your hotel? He said, sir, tomorrow the world is coming here. I need to be ready. That is Bharat Buildcon in one sentence. The world is coming and India is ready. Ladies and gentlemen, there is a moment in life of every great nation when the ambition stops being a dream and becomes a blueprint. When the scaffolding rises, when the crane begins to move, when the first tile is set, the beam is placed, and the roof finally rises over a family that never had one. India is living that moment, right now, today. We welcome you to Bharat Buildcon 2026, India's premier, most ambitious, most inclusive international exhibition for building and construction materials. Over the next 4 days, this exhibition will host over 300 Indian exhibitors from clusters across the nation, more than 600 international buyers from over 100 countries, over 30,000 domestic trade visitors, architects, engineers, developers, contractors, and institutional buyers, structured B2B meetings, and high-level policy sessions. India is today not just an emerging market, it's an emerging world. For all our Indian manufacturers and exhibitors in this hall, I have a message. The world has come to you. Do not let this moment pass. Be proud, be ready, be honest, and be bold. Ladies and gentlemen, I would like to close with something that stays with me always. Infrastructure is always discussed in terms of numbers, in millions and billions, GDP percentage, export targets. Those numbers do matter, but behind every number, there is a human being. Behind every house built under the Prime Minister's Awas Yojana, there is a mother who spent years under leaking roof and for the first time, tucks her child into the room that is hers. Behind every road built, there is a farmer who can now grow his produce and take it to the market before it spills. Behind every building that rises in our cities, there is a worker, an architect, a tile maker, a hardware supplier whose livelihood is growing alongside it. That is what construction means. That is what building materials mean. Bharat Buildcon 2026 is a step in that journey, a proud step, a purposeful step, and a joyous step. I invite everybody to take benefit from this platform, from this exhibition, do maximum business that you can. And again, welcome to all the delegates. You are not just at the trade fair, you are at the beginning of something that is much larger. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. A huge round of applause for Vishal Acharya ji, Director of Bharat Buildcon. Thank you, sir, for your insightful remarks. Now, as a token of our gratitude and respect, we shall now felicitate our esteemed chief guest and guests of honor. I request the organizers of Bharat Buildcon to kindly come forward for the felicitation ceremony. I invite Shri Jitendra Katheria ji, Shri Vishal Acharya, Shri Vijay Aghara, Shri Abhi Bopalia, directors of Bharat Buildcon, to welcome and felicitate our chief guest. May we have an enthusiastic round of applause as we felicitate our chief guest. Thank you, dignitaries. I now request the Committee of Administration of CapExcel, Export Promotion Council under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, to kindly come forward and felicitate
Honorable Minister Shri Jitin Prasada ji. I invite Shri Nilesh Bhai Jetparia, Chairman Ceramics and Refractories Panel, Shri Narendra Sanghat, Western Region Committee Member, Shri Chitranjan Bhattacharya, Panel Chairman, Paints, Printing, Ink and Allied Products, Shri Pradeep Gupta ji, Shri T. Durai, Panel Chairman, Animal Byproducts Panel, and Shri Dinesh Goyal, Panel Chairman, Books and Publications. Please come on stage quickly as we felicitate our guest of honor. Okay. Ladies and gentlemen, please put your hands together and join me in welcoming them on stage for this special felicitation ceremony. Thank you, dignitaries. I now request Shri Jitendra Kathiria ji, Shri Vishal Acharya ji, Shri Vijay Aghara, Shri Nilesh Bhai Jetparia and Shri Narendra Sanghat to felicitate our guest of honor, Shri Purushottam Rupala ji, Member of Parliament. A huge round of applause. Give it up for our guest of honor. Thank you, dignitaries. Ladies and gentlemen, events of this scale and significance are made possible through the encouragement and commitment of organizations that share our vision and objectives. We now move on to a special segment of today's program, the felicitation of our valued sponsors whose support and partnership have played a vital role in making this event a reality. It is now my privilege to invite our Powered By sponsor, Mr. Pankaj Satija, Executive Vice President, JSW. Our diamond sponsors, please come on stage. Shri Satish Bopalia, Director of Solar Textiles. Shri Syed Ishtiaq, Founder and CEO, Raftar.ai, Representative from Shri Cement. Shri Nitin Hapani, Director, Keech Architectural Products. Ladies and gentlemen, a huge round of applause as we welcome our sponsors. Without our sponsors, we would not be able to conduct this event. I request Honorable Chief Guest Manohar Lalji to felicitate our sponsors as a token of appreciation for their support and commitment. Thank you. We shall now, felicitating our sponsors with the trophy for their hard work and commitment towards the event. Thank you, dignitaries. We now move on to the felicitation of our gold sponsors whose generous support has been instrumental in the success of Bharat Buildcon. It is my pleasure to invite Shri Rohan Menon, GM Branding Jindal Steel Limited, Shri Rajiv Ghosh, Regional Manager, Pidilite Industries, Chairman of Coverstone Ceramics, Co-founder and CEO Hon'ble. Please make your way to the stage. I request our guest of honor, Shri Jitin Prasada ji, to kindly felicitate our gold sponsors as a token of appreciation and recognition for their commitment. Finally, we come to the felicitation of our associate sponsors. I invite on stage representative Shri Avtar Singh Buller, Export Head, Century Plyboards India and Action Tessa.
Representative from Action to Tessa to quickly make their way on the stage to receive their memento. We are grateful for your valued association. Ladies and gentlemen, please join me in giving our associate sponsors a huge round of applause. Once again, thank you to our associate sponsors. We appreciate your commitment and hard work in making this event possible. A huge round of applause for our associate sponsors. Ladies and gentlemen, keep the energy high. We are at the inaugural ceremony of Bharat Buildcon 2026. It gives me great pleasure to invite our guest of honor, Shri Jitin Prasada ji, Minister of State for Commerce and Industry, Government of India, to offer his insights and guidance. So, thank you and a very good morning. For the benefit of our foreign participants from overseas, I'll be speaking in English. Respected Manohar Lal ji, Honorable Union Minister of Housing and Urban Affairs, Shri Purushottam Rupala ji, Honorable Member Parliament, Shri Jitendra Katheria, Director Buildcon, Shri Manoj Rastogi, Cement Association JSW Group, Shri Nilesh Bhai Jetaria, Chairman Ceramic Panels, Shri Vishal Acharya, Shri Praveen Jain, and in front of me, all stakeholders of the Buildcon ecosystem who are ensuring that this foundation of India, which the building blocks of India are being made with top quality and big strength in this hall, all our foreign participants, friends from the media. It is a privilege to be here for this Buildcon 2026, and I'm very honored to be here in the presence of Manohar Lal ji and Purushottam Rupala ji, who have a significant contribution in this direction. I can tell you that over the years, especially in the last decade, after Shri Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, he took over and took charge. We are seeing a new India, an India which is being transformed, and at every scale and every step, it is a new brand India which the world is talking about. And I can tell you that being in the Commerce Ministry, we've gone ahead with a series of free trade agreements with the developed world. And today I can say with great pride that at one point of time, the countries which did not want to look at India are today very eager to see and partner with India, because India today has become the talent capital of the world, the manufacturing hub of the world. And Prime Minister Modi ji says, amongst many things, he talks about one thing on manufacturing, and that is called quality. Quality and quality and quality. And that is what India has become. We have become very quality conscious. Our products are world class. Whatever we do, we not only make for India, we want to make for the world. So I invite especially our foreign participants to come and see and explore today this whole exhibition that is here, which I can call one word in Hindi,
which is called, like in Prayag, there was a Mahakumbh where people took the dip in the holy Ganga, where the world descended. For the building fraternity, this Buildcon is a Mahakumbh, where you will see everything from small fittings, furnitures, to cements, to steel, to interiors, the works. And India has come of age. And even, like I said, we make not only for India, but for the world. And this 1.4 billion people that India is a transformation. At one point of time, our population was a burden. But now, this 1.4 billion people are India's biggest strength. They have the money, they have the spending power, they have become quality conscious, they want the world's best products, and they want everything that is available in the developed world. We want it for our people, last mile till the villages, and that's what India has to offer, the scale and size of our market. But I want to tell our foreign participants, especially, that don't treat India as just a market where you sell your products and take the profits away. We in India want to partner with you shoulder to shoulder. We want our MSMEs to grow with you. And with this, I can tell our MSMEs, the Indian MSMEs, that now with these free trade agreements, the biggest market of the world has opened for you. The opportunities are limitless. First, only big companies used to corner the international markets. Isn't it right? Now, with our small players, if you have that quality product, the world is waiting for you. Under Prime Minister Modi ji, we have ensured free trade market access to 70% of the developed world, be it the European Union, Australia, Oman, New Zealand. And yesterday only Prime Minister Modi ji has kicked off the India-UK SEPA agreement, which will kick off from the 15th of July, which will again open up a new market for us and the European Union. The announcement has been made by the year end. For engineering goods, for our products, you have not only India, but the whole world waiting for you. And the other thing that I noticed was of technology. And the other thing that India is going ahead with is artificial intelligence, semiconductors, and those are those things at one point of time India lacked. But under Prime Minister Modi ji's vision, India has become a hub for semiconductor manufacturing, design, packaging, the whole ecosystem, so that we don't have to depend on any other country for our technology. And that is called real Atmanirbharta in the real sense. And I'm very glad the brief visit that I had to one of the two stalls here. They are using technology for construction. They're using state-of-the-art platforms, one-stop shop, kind of platforms, where from land to everything that involves construction is available at the click of a button. So I won't take much of a time. My best wishes. I assure you the whole support of the Commerce Ministry, of the IT Ministry, and of course Khattarji is here, and on behalf of Khattarji, I can say the whole government of India is ready to roll out the red carpet. And two things that Prime Minister Modi ji does: one is ease of doing business, and the other is ease of living. And I'm sure you all will be partners in this whole journey of India, where we'll ensure that it is a hassle-free business for anyone who wants to come and set shop in India. And your products will be available not only to the top tier, but the tier 2, tier 3 cities, to our villages where India resides. You will bring them quality products and improve the standard of living of the Indian citizen. With those words, I thank you, all the organizers, for having invited me here. With that, my best wishes to this whole event. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for our guest of honor, Shri Jitin Prasada ji. The Ministry of Commerce has indeed signed remarkable number of free trade agreements. You must utilize them all. We are now privileged to hear from our chief guest, Shri Manohar Lal ji, Union Minister of Housing and Urban Affairs, Government of India.
आज के इस 4 दिवसीय भारत बिल्डकॉन के द्वारा आयोजित इस सेमिनार में मंच पर उपस्थित श्री जितेंद्र प्रसाद जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री नीलेश जेतप्रिया जी, चेयरमैन सिरेपिक एंड रेफ्रैक्टिव पैनल, श्री जितेंद्र कथीरिया जी, डायरेक्टर ऑफ भारत बिल्डकॉन एंड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ द ट्रेड, श्री विशाल आचार्य जी, डायरेक्टर ऑफ भारत बिल्डकॉन, श्री प्रवीण जैन जी, प्रेसिडेंट नरेडको, श्री मनोज रस्तोगी जी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट JSW सीमेंट। मित्रों, भारत बिल्डकॉन के इस आयोजन में उपस्थित सभी भारत निर्माताओं को मैं बधाई देता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एंड आई एम हैप्पी टू सी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ nearly 90 countries of the world who are present here. I especially welcome them in attending this session. साथियों, इससे पहले भी मैं नरेडको, क्रिडको, क्रेडाई इस प्रकार के कई संस्थाओं के कार्यक्रमों में गया हूं। ये ठीक है कि वो सब संस्थाएं एक बिल्डर्स की एसोसिएशन उस नाते से वहां सारा विचार हुआ, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, भारत बिल्डकॉन ये एक संस्थान ऐसे कंट्रैक्टर्स की, ऐसे स्वयं निर्माता होकर के जो काम करते हैं, उनकी एक संस्था के नाते से पहली बार आपके बीच में मैं आया हूं। आप सब लोग स्वयं बनाते हैं, बाकी बिल्डर्स बनवाते हैं, तो स्वयं बनाने वालों की अपनी एक भूमिका, एक महत्व ये पर्याप्त मात्रा में कहा जा सकता है। इस 4 दिवसीय सेमिनार जो यशोभूमि में बन रहा है, इसके अंदर हम लोग जो विचार करेंगे, जिसमें निर्माण सामग्री, निर्माण कार्य से जुड़े हुए जितने निर्माता, टेक्नोलॉजी और समाधान प्रदाता, इन सब को एक मंच पर आकर के 4 दिन का ये जो कार्यक्रम है, इसके अंदर विशेष प्रकार का एक मंच ये बनाया गया है। इसमें जितने भी हमारे हितधारक हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब नीति निर्माता हैं, रिसर्चर्स हैं, वो सब बैठ करके अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं, व्हाट वी नीड इन फ्यूचर, उसके ऊपर एक विचार करेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत तेजी से जो हमारा बदल रहा ऑर्गेनाइजेशन का जो एक विषय है, उसके ऊपर हम फोकस कर पाएंगे। और आज आधुनिक तकनीक और उसमें जो निर्माता हैं, वो उसमें किस किस बात का ध्यान रखते हैं, अगर उदाहरण लेना हो तो जहां हम बैठे हैं अपने आप में यशोभूमि इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये कन्वेंशन सेंटर, इसी प्रकार हमारा भारत मंडपम, अब हम देखते हैं तो सरकार के भवन जितने बनाए जा रहे हैं, अभी निर्माण भवन यानी हमारे जो सरकारी भवन हैं, हमारा पार्लियामेंट है, इस प्रकार के कर्तव्य भवन हैं, इनके निर्माण में भी इन सब विधाओं का, इस टेक्नोलॉजी का, निर्माण की सामग्री का, ड्यूरेबिलिटी का एक बहुत बड़ा जो ध्यान रखा जाता है, ये सब उसके उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के 12 साल, ये कार्यकाल अपने आप में एक उल्लेखनीय कार्यकाल है। जो गति इन 12 सालों में बनी है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज देश में कंस्ट्रक्शन और जो निर्माण जितना हो रहा है, एक नई ऊंचाइयों को ये छू रहा है। तो इस सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत सराहना करता हूं। मित्रों, भाइयों बहनों, जो काम अभी हम कर रहे हैं, इसमें और जो आवश्यकताएं हैं, उसमें पहली आवश्यकता ये है कि हमको अपनी गति बढ़ानी होगी, स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि जिस गति से अर्बनाइजेशन हो रहा है, उस गति को ध्यान में रखते हुए हमको स्पीड को अपना बढ़ाना होगा। आज जैसे शहरीकरण में हमको मालूम है कि अप टू 2011 हमारी जो पॉपुलेशन है इन अर्बन यानी सिटीज ओनली 37.7 करोड़, ये हमारी उस समय पॉपुलेशन थी। और अगर इसका अनुमान आज लगाते हैं तो 2030 तक ये 60 करोड़ पॉपुलेशन होने जा रही है।
और न केवल 2030 तक, हम अनुमान अपनी लॉन्ग जिसको कहना चाहिए अपनी तैयारी के नाते से लंबे समय की तैयारी 2047 तक हमारे देश की आबादी का अनुमान है 160 करोड़, आउट ऑफ विच 50% यानी 80 करोड़ वो हमारी अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन होगी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए उनके घरों की चिंता, उनकी जितनी भी अन्य आवश्यकताएं हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव आवश्यकताओं को लेकर के भी जहां जहां निर्माण की गति है उसको बहुत तेज गति से बढ़ाना होगा। अभी आज का अनुमान ये है कि हमारे निर्माण की गति प्रति वर्ष लगभग 70 करोड़ से 90 करोड़ वर्ग मीटर ये भी होती है। अगर घरों घरों की मैं बात कहूं तो 1 करोड़ से ज्यादा घर हमें शहरों में इस हर वर्ष की जो बढ़ती हुई गति है उसको देख करके हमको बनाने होंगे। जब इतना बड़ा एक सेक्टर है तो इस बड़े सेक्टर को ध्यान करने के लिए इस प्रकार के सेमिनार की बहुत ही एक महती आवश्यकता है। इनमें जिन बातों पर आगे ध्यान करने की विचार मन में आता है उसमें क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की चीजें, ड्यूरेबिलिटी, लंबे समय तक भवनों का निर्माण ये हमारा कैसे टिकाऊ हो। हम जानते हैं कि हमारे बहुत से प्राचीन समय की टेक्नोलॉजी ऐसी सी थी, आज देश के कई इमारतें ऐसी हैं, खास करके हमारे पुरातन समय के बने हुए भवन, मंदिर आदि, जो ऐसा बताया जाता है कि 1,000 साल से बने हुए, यानी उस समय के भवन आज भी विद्यमान हैं। आखिर उस समय कोई टेक्नोलॉजी अपनाई गई होगी। आज भी हम बहुत अच्छा निर्माण कर रहे हैं, फिर भी सामान्य जो हमारा ड्यूरेशन है वो बताया जाता है कि 60 साल 70 साल की बिल्डिंग हम बना रहे हैं। मेरा उसमें आग्रह है कि हम बिल्डिंग बनाते समय रिक्वायरमेंट जब दी जाती है बिल्डिंग की, उसमें स्पेसिफाई करें कि कितने समय की ड्यूरेबिलिटी इस बिल्डिंग की होगी। वो 50-60 साल भी हो सकती है, वो 100 साल भी हो सकती है, वो 500 साल भी हो सकती है। हर प्रकार की ड्यूरेबिलिटी की बिल्डिंग बनाने का एक विषय ये हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके साथ ही उसकी अफोर्डेबिलिटी उसका भी विषय आएगा। हम ऐसे भवन जहां अफोर्डेबिलिटी की चिंता नहीं है वो लंबे समय तक बनाई जा सकती हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति जिसको अपना घर बनाना है उसकी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रख करके हमको करना होगा। अब अफोर्डेबिलिटी में हर व्यक्ति के लेवल का एक चिंता करना, हमारे यहाँ गरीब भी हैं, मध्यम वर्गीय भी हैं, अमीर भी हैं। हमको 5 से 15 लाख के मकान भी उपलब्ध कराने होंगे। भले उसमें सरकार कुछ योगदान करेगी, संस्थाएं योगदान करेंगी, कुछ एनजीओ योगदान करेंगी। हमको 15 से 50 लाख तक के भी मकान इसकी श्रेणी भी बनानी होगी। अफोर्डेबल किसको कहेंगे, इसकी डेफिनेशन ये भी तरह तरह के, अभी कल ही मुझे जैन साहब आए थे, मिले थे, तो उन्होंने कहा कि अफोर्डेबिलिटी ये हमारे यहाँ एक लिमिट इसकी रखी गई कि 45 लाख रुपए तक का जो मकान है दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अफोर्डेबिलिटी। इस लिमिट को बढ़ाया जाए। वो और कोई विषय नहीं था, जस्ट जीएसटी का विषय आया था कि उसमें 1% है, उसमें 5% हो जाता है, इज़न्ट इट? तो उस नाते से ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी हमें अफोर्डेबिलिटी के नाते हर व्यक्ति की चिंता। 50 लाख के बाद 1 करोड़ तक के मकान का अलग एक वर्ग है, 1 करोड़ से ऊपर वाले मकानों का अलग अपना वर्ग है। कल ही मैं एक समाचार पढ़ रहा था कि एक रेजिडेंशियल फ्लैट 135 करोड़ रुपए का भी बिका है। तो हर तरह की कंस्ट्रक्शन, हर तरह की क्वालिटी, हर तरह की ड्यूरेबिलिटी, ये हमको ध्यान में रख करके छोटे बड़े सब प्रकार के विषयों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो इस पर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जहां तक ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी का विषय है, पिछले दिनों में कुछ केस ध्यान में आए कि कई बिल्डिंग्स को नॉट उनको कहेंगे कि इनके रहने लायक नहीं है, नॉट लिवेबल, गिरा करके दोबारा बनाने का ऑर्डर भी कोर्ट ने किया है। अब ये चौंकाने वाला विषय है। इससे बहुत बड़ा लॉस, नेशनल लॉस भी है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसका लॉस भी है। तो इसलिए प्रारंभ में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्वालिटी अगर ठीक होगी तो ऐसी नौबत जो है गुणवत्ता की ना आए, इसके लिए स्पेशली ड्यूरेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट, इसको भी हम एडमिनिस्ट्रेटिवली तो सोच ही रहे हैं कि इसको अनिवार्य किया जाए कि न किया जाए, लेकिन हम अपने आप में अपनी संस्थाओं के माध्यम से इसको लागू करें कि ड्यूरेबिलिटी का एक सर्टिफाइड सिस्टम ये हर एक बिल्डिंग का होना चाहिए, ताकि कंज्यूमर जो है उसको तसल्ली हो सके कि ये बिल्डिंग सेफ है, सुरक्षित है।
इस निर्माण में समय कैसे बचाया जाए। समय बचाने के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है। प्रीफैब हमारा जो फैब्रिकेटेड मटेरियल है, इस पर भी हमको ध्यान करना चाहिए। और ये मटेरियल अब बनाना टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाना कठिन नहीं है। हम देखते हैं चाइना में ऐसे ऐसे उदाहरण इस टेक्नोलॉजी के हमको मिले हैं। 2 दिन के अंदर मेट्रो स्टेशन को खड़ा कर दिया प्रीफैब से। तो आखिर इस टेक्नोलॉजी को हम भी खास करके प्रदूषण को कम करने के लिए, वातावरण को ठीक रखने के लिए बड़े शहरों में तो जरूर इसको लागू करने का हमको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का इसमें सहायता की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से आप कुछ भी बताएंगे उसको हम करने के लिए तैयार हैं। अभी 3D प्रिंटिंग, ये भी एक टेक्नोलॉजी आ गई है। सरिये की जगह इंजीनियरिंग बम्बू ये लगा करके बिल्डिंग बनाने का विषय भी आ गया है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी में बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पर हमको सबको विचार करने की आवश्यकता है। मित्रों, न केवल बिल्डिंग्स बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने सेक्टर में बहुत सहायता करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सरकार ने भी बहुत इसमें कदम आगे बढ़ाए हैं। एक समय था 2014 में बजट में सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा जाता था। और इस बार का 26-27 का जो बजट आया है, इस बजट में मोदी जी ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार 12.2 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ रुपए से ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है। इसमें हाईवेज हैं, इसमें मेट्रोज हैं, इसमें रेलवेज हैं। जितने तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बन सकता है वो भी हमने आगे बढ़ाने के लिए किया है। अभी 2 दिन पहले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, खास करके इन 4 स्टेट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग हमने की और उसमें दिल्ली का जो दबाव है आबादी का वो कम करने के लिए हम कैसे और आउटवर्ड साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोड्स है, चाहे रेलवे है, मेट्रो है, आरआरटीएस है, इसको बढ़ाएं। और 4 नए शहर इन 4 प्रांतों में, ये भी हमने एक महत्वाकांक्षी योजना, उसमें 5,000 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए रखी है ताकि नए शहरों का निर्माण ये हम इनमें करें, ताकि दिल्ली की आबादी को हम उन रास्तों के माध्यम से और इस दबाव को कम करने के लिए हम इन शहरों में भी एक अच्छा रहने का अवसर इसमें दें। एक पॉलिसी टीओडी हमने बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, अर्थात जो रेलवे ट्रैक्स हैं, मेट्रो ट्रैक्स हैं, आरआरटीएस ट्रैक्स हैं, रोड्स के ट्रैक्स हैं, उनके विद इन यानी ऑन फुट रीचेबिलिटी, वहां पर जितना कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी ताकि रोड्स का जाम ये भी खत्म हो। विद इन 500 मीटर ऑफ रेलवे यानी मेट्रो ट्रैक बिल्डिंग्स बनाने के लिए स्पेशल फोकस न केवल दिल्ली में किया गया बल्कि देश भर में हमने इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ज्यादा मकान उतरे बनाए ताकि व्यक्ति को बाई फुट हम अपने डेस्टिनेशन पर, मेट्रो पर पहुंच सकें, ताकि डेस्टिनेशन पहुंच सकें। तो इसके लिए भी एक योजना बनाई गई है, इसका लाभ हमको सबको उठाना चाहिए। जहां तक घरों की बात है, पीएमएवाई एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया था 2020 में, रादर उससे भी पहले किया था। तो अभी तक 1,25,00,000 मकान इसका स्वीकृत किए गए हैं और 99 लाख मकानों का और जो निर्माण पूरा हो चुका है। 2028-29 तक 1 करोड़ और मकान ये भारत सरकार उसमें योगदान करने वाली है पीएमएवाई में। तो इस पर भी हम लोग शहरी परिवारों को एक सहयोग देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पीएमएवाई के नाते से एक गरीब आदमी को घर का एक रहने का उसको अवसर तो मिलता ही है, लेकिन जितने प्रकार के निर्माण हैं, इस निर्माण में हमारे देश की अर्थव्यवस्था ये भी बहुत हाई लेवल यानी 8% का अभी आज योगदान इस सेक्टर का चल रहा है। आने वाले समय में निर्माण की गति इतनी बढ़ने वाली है कि इसमें आंकलन किया जा रहा है कि मोर देन 16% ऑफ आवर जीडीपी इट विल डिपेंड ऑन दिस सेक्टर। तो इसलिए बहुत बड़ा सेक्टर ये बनने वाला है, इसमें हम सबको ध्यान रख करके आगे बढ़ना होगा। रोजगार की व्यवस्था ये भी इसके अंदर यानी हम जब जानते हैं कि कितने व्यक्ति दिवस, मैन डेज
इस सारे सेक्टर में पर ईयर रोजगार जो मिलता है, इसके अंदर भी बहुत अधिक एक बड़ा एक आंकड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन गतिविधियों के माध्यम से 1000 करोड़ से ज्यादा मैन डेज इसमें लगते हैं एनुअली। और इसमें जो निर्माता है उनको सबको मालूम है कि एक सेस लगाया गया सरकार के द्वारा, बिल्डिंग वर्कर्स सेस जो लगाया जाता है, उसकी बहुत बड़ी अमाउंट जो हमारे वर्कर्स हैं इनके भलाई के लिए, इनके वेलफेयर के लिए खर्च करने के लिए हमारी आवश्यकता है। अच्छे अच्छे सुझाव इसमें आए हैं। एक चीज हमने तय की है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स अपने वर्कर्स के लिए टेम्परेरी रेजिडेंस इन द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने स्थान पर लाएगा, उसका जो प्रीफेब जितना भी आवास व्यवस्था है एट कैंप साइट्स, उसका जितना खर्च है, खास करके उसका निर्माण करने में जो उसका कंस्ट्रक्शन खर्च आता है, उसमें कुछ सहायता हम उस सेस में से करने के लिए योजना बना रहे हैं। बहुत जल्दी आपको उसकी जानकारी हम देंगे। इसी प्रकार मेट्रो के नाते से जैसा हमको पता है कि बहुत तेज गति से मेट्रो हम बना रहे हैं। आज दुनिया के तीसरे स्थान पर भारत का स्थान आता है। फर्स्ट इज चाइना, देन यूएसए, और भारतवर्ष में आज 1155 किलोमीटर लंबा मेट्रो लाइन 29 शहरों के अंदर आज इस समय काम कर रही हैं। लगभग 950 किलोमीटर अभी और अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 2000 किलोमीटर जब ये होगा तो मुझे लगता है कि हम यूएसए से भी आगे पार कर जाएंगे, विल बी सेकंड इन द वर्ल्ड। इसलिए मेट्रो बहुत तेज गति से 29 शहरों में जो चल रही है, अन्य शहरों के डिमांड पर भी हम जरूर ध्यान करेंगे। अब मेट्रो के साथ साथ टीओडी का जो हमने एक विषय, एक योजना, पॉलिसी बनाई है, उसमें एक और आता है कि हमारा लैंड कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है। आखिर लैंड तो लिमिटेड है, इट्स नॉट फ्लेक्सिबल। तो एक विचार ये भी चल रहा है पॉलिसी बनाने के लिए, आपसे राय जरूर मांगना चाहेंगे हम, कि जो एयर स्पेस है उसके राइट्स ये बिल्डर्स को दिए जाएं, ताकि हम रेलवे ट्रैक्स, मेट्रो ट्रैक्स, रोड्स, इसके ऊपर टेक्नोलॉजी हमारी अगर अनुमति दे तो उसके ऊपर भी 8-8, 10 मंजिल बिल्डिंग्स या उससे भी ज्यादा अगर डेंसिटी अलाउ करती है तो उससे भी ज्यादा बना सकते हैं, ताकि अतिरिक्त आवास व्यवस्था के लिए या हमारे जो कार्यालय बनते हैं या सर्विसेज होती हैं उसके लिए लैंड की आवश्यकता को कैसे कम किया जाए। क्योंकि आज हमारी कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा कॉस्टिंग अगर आती है तो वो आती है लैंड के ऊपर। तो लैंड कंस्ट्रेंट को कैसे खत्म किया जाए, इसमें बहुत पॉलिसीज विचार की जा रही हैं। हमारी डेंसिटी कैसे बढ़े, इस डेंसिटी को बढ़ाने के लिए जो सर्विसेज हैं, वाटर सर्विसेज, डिस्पोजल सर्विसेज, ये जितनी ज़्यादा हम बना पाएंगे उतना ही उसकी डेंसिटी बढ़ सकती है। और इसके लिए इस बार प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की अपने बजट के अंदर, हमने जो सुना है, 1 लाख करोड़ रुपया अर्बन चैलेंज फंड, इसकी घोषणा की गई है। और इस 1 लाख करोड़ की 4 लाख करोड़ तक की योजनाएं अगले 5 साल में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यानी सर्विसेज हो, उसके लिए 4 लाख करोड़ रुपया शहरों के अंदर, इसको भी एक घोषणा की गई है। और मैं समझता हूँ इससे हमारा जो स्कोप ऑफ बिल्डिंग्स वो सब इसमें बढ़ने वाला है। ये भी आपको जानकारी के लिए इतना मुझे बताना था। मित्रों, टेक्निक भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। हमारी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, इस नाते से जो शुरुआत की गई है, दुनिया की जितने भी एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज हैं उन सब का अध्ययन करके और हमको यहाँ देश में लागू करना है। अभी भी 6 अलग अलग टेक्निक जो हमारे लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स जितने भी बने हैं, उससे ये सिद्ध हुआ है कि ये जो आधुनिक जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें स्पीड भी बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है और निर्माण हमारा जो है बड़ा टिकाऊ बनता है। तो ये एक प्रयोग सिद्ध किया जा चुका है। इन टेक्नोलॉजीज के आधार के ऊपर आप आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये जितने भी काम हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो अथवा अन्य कंस्ट्रक्शन के जो वर्क हैं, उसके अंदर केवल कॉन्ट्रैक्टर्स या बिल्डर्स इनको लाभ नहीं होता, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई जितने भी अन्य उद्योग की जितने भी चीज़ें हैं, उसमें हमारे एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डिजाइनर्स हैं, निर्माण सामग्री के जो निर्माता हैं, उन सबके लिए एक बहुत बड़ा स्फीयर ये अपने आप में खुला हुआ है। और उस सबको भी एक आह्वान जो प्रधानमंत्री जी ने किया,
उसका बहुत बड़ा लाभ आज हमको मिल रहा है, दुनिया में अपना स्थान बढ़ रहा है, वो है मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। इसके आधार पर भी हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें हमको मिलता है। हम कैसे अपनी विदेशी मुद्रा को बचाएं और देश में एक मजबूत आर्थिक स्थिति के नाते से आगे बढ़ने में हम कैसे इसको योगदान कर सकते हैं, हमारी विकास की रणनीति का ये हिस्सा है। बिल्डिंग्स में पर्यावरण का ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हमने अगर अध्ययन किया होगा तो प्राचीन काल में जितना निर्माण होता था बिल्डिंग्स का, पर्यावरण प्रदूषण समाप्त करना, हमारे एनवायरमेंटल जितने इश्यूज हैं उसको बहुत ध्यान रखा जाता था। किधर उसकी दिशा होनी चाहिए, पूर्व में हो पश्चिम में हो, कैसे उसका हवा का रोशनी का सब प्रबंध हो, वास्तु के नाते से बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारे ध्यान जो रखे जाते थे ये निरर्थक नहीं थे, बहुत सार्थक इनका एक अर्थ था। तो उस अर्थ के नाते से हम भी वो सब चीज़ें ध्यान रखते हैं। जहाँ कहीं कमी हो उसको और ध्यान रखना चाहिए। और इसमें एक जो बड़ा विषय है जिसके लिए ज़रूर मैं आपको आज आह्वान करूँगा कि हमारा जो पुराना निर्माण हुआ है और जिसको हम आवश्यकता के हिसाब से उसको बदलते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो पुराने मकानों की जो सामग्री है, जो C&D वेस्ट है, जो इसकी प्रोसेसिंग करके इसका उपयोग ये भी हम निर्माण कार्य में करना शुरू करें। अगर उसका निर्माण कार्य में शुरुआत करेंगे तो देश में एक बड़ी समस्या जो लिगेसी वेस्ट की है उस सारे को समाप्त करके हम इस बिल्डिंग मटेरियल को उसका उपयोग रीयूज करने का काम भी हमको निर्माण में करना चाहिए, ताकि हम एक साथ इन सब समस्याओं को हल कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा नया बनाना एक काम है, लेकिन पुराने का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो इसका विचार करना ही चाहिए। तो ये जो चुनौती है वेस्ट मटेरियल की, इसको निर्माण में ज़्यादा कैसे उपयोग कर सकते हैं, जो मलबा है, पुराना कचरा है, इस सबको ध्यान रखें। और आज तकनीक ऐसी है जिसके अंदर ज़ीरो वेस्ट इमारतें ये बननी चाहिए। अगर हम ज़ीरो वेस्ट इमारतें बनाते हैं तो हमारा जो वेस्ट है, हमारा जो लिक्विड एक्सक्रीशन है, हमारा जो वहाँ पर पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो एक मेथोडोलॉजी है, हर स्थान पर पोर्टेबल वाटर देना भी संभव होता नहीं है, लिमिटेड वाटर है हमारे पास। इसलिए वेस्ट वाटर को प्रोसेसिंग करना या बरसात के पानी को ज़ीरो डिस्चार्ज के नाते से उसको किस प्रकार से डिस्चार्जिंग में काम लाना, इसको भी अनिवार्य रूप से हमको ध्यान रखना ही चाहिए। सरकार अपने तौर पर बहुत से नियम कायदे कानून बनाती है, लेकिन उसको वास्तविकता में जमीन पर उतारना ये हमारी अपनी चिंता पर निर्भर करता है। हम उसकी कितना चिंता करते हैं, उसको ज़रूर करेंगे तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं इसका भी जो चुनौती आगे आ रही है, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो प्रदूषण की हो, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए अगली पीढ़ी को भी हम इसको कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, इसका भी हमको ध्यान करना होगा। मित्रों, एक चुनौती कई बार बिल्डर्स के सामने आती है, कभी कभी फाइनेंशियल तरीके से, और वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से दुर्घटनावश किसी कठिनाई में फंसता है और उसके कारण उसका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। बहुत से विषय कोर्ट्स में जाते हैं, कहीं NCLT में जाते हैं, कहीं किन्हीं भी कारणों से उसको परेशानी जब झेलनी पड़ती है, तो वो स्थितियाँ भी हमने कई बिल्डर्स की देखी हैं। उसको कैसे उसमें से बचना है, तो पहली बात हमारी अपनी सावधानी कि हम क्या किसी ऐसे कुचक्र में न फंसे, और वो हमारी लिमिटेशंस जो है काम करने की, उसको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हम कई बार अपने वो कहते हैं ना कि तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, अपनी कैपेसिटी से बाहर जा करके काम करने का जो स्वभाव, एक ग्रीडी एटीट्यूड, इस पर ज़रूर सबको कंट्रोल अपना रखना चाहिए। अदरवाइज सब आपको देंगे, लेकिन जब कठिनाई आएगी सब हाथ खींचेंगे, और एक बार हाथ खींचना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने शुरू कर दिया तो सारे, चाहे वो बिल्डर्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चाहे वो अप टू लेबर, सब कठिनाई में फंसते हैं। तो इसको बचने के लिए हमें ज़रूर अपने यहाँ इंडस्ट्री में भी बैठ के विचार करना चाहिए कि कैसे हम इन सब चीज़ों में से बच सकते हैं। साथियों, आज आप 4 दिन के लिए विचार करेंगे, और न केवल अपने देश के लोग, बल्कि आज मैं देख रहा हूँ सो मेनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यानी अदर कंट्रीज ऑल्सो दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट। दुनिया के लोगों के साथ हम जब व्यवहार करते हैं तो देयर आर सो मेनी मॉडल्स, B2B is a model, G2G is a model, B2G is a model, G2B is a model,
हम सब मॉडल्स का उपयोग करें, लेकिन भारतवर्ष के लोग एक नए मॉडल पर जरूर विचार करें। दैट मॉडल इज H2H, मीन्स हार्ट टू हार्ट। हमें बाकी सब चीजें फाइनेंशियल हो सकती हैं, लेकिन ये हमारे देश की जो परंपरा है, संस्कार हैं, भावनाएं हैं, इसके हिसाब से दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में आकर के, एनीबडी हु वांट्स टू इन्वेस्ट हियर इन इंडिया इज वेलकम्ड। और जितना ज्यादा इस प्रकार से हम उनका वेलकम करेंगे, आज दुनिया की जो उथल पुथल है हम सब देख रहे हैं, लेकिन उस उथल पुथल में भारतवर्ष अंतोगत्वा एक विनर की पोजीशन में आके खड़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you, sir. Thank you, sir, for your inspiring address and encouragement to the industry. I would now like to invite our diamond sponsor, Shri Satish Bopalia, Director of SolarX Tiles. Yeah, please, Satish sir, please come on stage. Once again, we're very thankful to our associate sponsors, gold sponsors, diamond sponsors as well. A huge round of applause for our diamond sponsor, SolarX Tiles. Thank you, sir. We now move to a special segment in the inaugural ceremony. I would like to announce that there is a book launch by Naredco. I invite Shri Praveen Jain, President Naredco. Naredco leaders to come on stage, please. Mr. Pradeep Agarwal from Signature Global, Mr. Praveen Agarwal, Signature Satwa, and Mr. Neeraj Bansal, KPMG. Please make your way to the stage for this special book launch by Naredco. Please gather for a group picture. Many congratulations to Naredco on their book launch. A huge round of applause from the audience. Thank you all. As we come to the close of this inaugural session, it is my privilege to invite Shri Nilesh Bhai Jetparia, Chairman, Ceramics and Allied Products Panel, Cap Excel, to deliver the vote of thanks. Over to you, sir. A huge round of applause as we welcome Shri Nilesh Bhai Jetparia, Chairman, Ceramics Panel, Cap Excel. Sir. Honorable Minister, dignitaries, industrial leader, partners and friends. It falls to me now to do something that no speech can ever fully accomplish, and that is to exudency thanks the people who made this possible. Bharat Buildcon is now a 4-day event. It is a full year of conversation, commitment and trust. And the gratitude I express today belong to every single person who invests in that year with us. We begin where it is all began, with the vision of guidance of Shri Piyush Goyal ji. He may not be present in this hall today, but his presence has been felt throughout this journey. He initiated this platform last year, graced our inaugural and lead us through the curtain raiser. His guidance shaped the direction we have walked ever since. We are deeply grateful, sir, to our Commerce Ministry and our House Minister, Ministry and Urban Affairs Ministry, the twin pillar of support that have stood behind this initiative.
our sincere gratitude. We are honored today by the presence of our senior most minister, is this all Shri Manohar ji sir. Your presence here itself a statement of the importance this government places on India's built environmental. Thank you, sir. Thank you for the time and encouragement and the grace with which you have engaged with this platform. We also extend our deep gratitude to Sri Jatin Prasad ji sir for his energy, his ability and his belief in what these industries can achieve. And Sri Purushottam Rupala ji, for 2 years now, you have been more than a minister to this initiative. You have been a mentor, a guiding light. You have given us your time, your counsel, and your confidence. That means more than we can put into words. To the official, joint secretary, and teams across our ministry who work behind the scene month after month, meeting after meeting. Thank you. The groundwork you lay by what makes movement like today possible. To NAREDCO, to the Council of Architects, and to every supporting partner, you extend your credibility to us, and we do not take that lightly. Thank you, sir. To our industrial association, thank you for mobilizing your members, for championing this platform, for the bringing your community for this hall. To the international buyer and delegation who have traveled to be there here from across the world to this stage. Your presence is a vote of confidence in India industries. We welcome you and we are deeply honored. To our exhibitor and industries leaders, you are soul of Bharat Buildcon. This platform exists because what you build, what you represent, and the story you tell the world about Indian manufacturing and craftsmanship. And finally, to the Bharat Buildcon team, every email sent at midnight, every logistic call that went 1 hour too long, every detail that the audience will never notice, but that you prepared anyway, this is your achievement as much as anyone's. We have worked hard this year, all of us together, and the response, the footfalls and partnerships, the energy is this whole has been overwhelming. We thank you from the bottom of our heart for your support throughout this year. We look forward with full faith, the great anticipation to your continued partnership as we build something even greater. Jai Hind, Vande Bharat, thank you. Thank you, Nilesh Bhai Jetparya ji. With this, we conclude the inaugural ceremony of Bharat Buildcon. I request the foreign buyers to come on the stage for a group picture. All the foreign delegates, I request you to quickly come towards the stage for a group picture. All the foreign delegates, the foreign buyers who have made their way to India, please make your way to the stage as well. Very quickly, we want a group picture. All the foreign delegates at the back, please come towards the stage. Very quickly, please make your way to the stage. All the foreign buyers. You're requested to occupy the space on the stairs. Keep climbing your way to the stairs and onto the stage. With this, ladies and gentlemen, the Bharat Buildcon International Exhibition is open for you all to visit. Go out there, visit, exhibit, make new connections. Come together to witness this experience curated for all of you.
Requesting the buyers to climb up the stairs and make their way on the stage. There are many of you behind the line. Yeah, please, please. Yeah, you can use these stairs. Please come. Once again, thank you to all organizers, association partners, exhibitors, delegates who have traveled all the way to India, friends from the media. Thank you, all of you. As we say in India, Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. Thank you, all the delegates. I once again would like to thank our chief guest and our guests of honor as they make their way from the hall towards the exhibition. And Bharat Buildcon 2026 is open for you all to visit. Please make your way to the exhibition. It is a great time to network, build connections. Thank you very much, ladies and gentlemen. This is your host, Mansamar Bedi, signing off.